Okay, so ladies and gentlemen, this is part 4 of the marriage compatibility. This is where we are going to learn a lot of things about uh, how good planets are giving sufferings, how Raj Yogas, you know, are giving sufferings in the Kundli. A lot of people get very excited to look at a chart and say, "Oh, I have this fantastic Raj Yoga in my Kundli," and especially in the Vishnu sthanas, which is the Kendras, right? I have a great Raj Yoga in the Lakshmi sthana, which is Trikonas, and but still my life is like huge suffering. It's like hell. Things are not working. I have great dasha going. Guruji, what to do, what not to do? Well, you know, great yogas are giving you a very small signal. Great yogas are giving you signal to become great. Simple, right? And when you become great, there is immense amount of suffering. Yes or no? Right? Tell me someone who has become so great in life and the person hasn't suffered. Tell me one person who's done fantastic in his or her life and he had not suffered. If you think there is one person, I would like to know about that person. There's not even one. So, so I will give you certain combinations today. How many combinations you have done? 14, 15 till now? 15. Okay, we've done 15, 50. right? 50. Okay, so I want some of you, either Sneha or Shashankji, to make notes and put those 15 all together, right? And put it in the class, right? So you people can revise them again and again. Okay, so now today is the 16th yoga. See, there are three culprits. I would not say them culprits, पर मैं उनको ये कहूंगा कि तीन ग्रह ऐसे हैं जो विवाहिक जीवन को सबसे ज्यादा खराब करते हैं। तीन ग्रह, ये मेरा एक्सपीरियंस है और शास्त्र भी कहते हैं। कॉम्बिनेशन है दोनों चीजों का। ये शनि के साथ जो ट्रायंगल बनता है ग्रहों का, राहु और केतु का, ये ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो वैवाहिक जीवन को बहुत जबरदस्त तरीके से प्रॉब्लम में डाल देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, शनि राहु कंजंक्शन और शनि केतु कंजंक्शन, स्पेशली इन 3 हाउसेस। कौन कौन से 3 घर? फर्स्ट हाउस, 7th हाउस, 12th हाउस और 7th फ्रॉम द वीनस। कहीं पे भी बन जाए लेकिन शुक्र से सप्तम में हो। इफ यू सी दिस योगा in the kundli of a boy or a girl, one thing you should put it in your brain, that you are going to marry a person who is going to have a bad mindset towards the marriage. What is that bad mindset? Because Saturn Rahu is a different mindset than Saturn Ketu.
Saturn Ketu is a very spiritual mindset. They are going to take relations in an extraordinary spiritual way. कोई भी संत की कुंडली उठा लीजिए, किसी भी गुरु की कुंडली उठा लीजिए, किसी महात्मा की कुंडली उठा लीजिए, शनि केतु का संबंध नजर आएगा। शनि केतु एक साथ होंगे, शनि केतु की युति होगी, प्रतियुति होगी, they'll be conjunct, aspecting each other, they'll be together, they'll be sitting in the nakshatras of each other. For sure. Because what is Ketu actually? Ketu is the highest form of spirituality. And Rahu is basically the highest form of transformation. How? Wherever Rahu sits in your kundli, and if there are planets that are with Rahu, honestly speaking, Rahu destroys them. If you have Sun and Rahu, Saturn and Rahu, Surya and Rahu, Shukra and Rahu, Mangal and Rahu, they are not, Rahu is not going to give them the energy. In fact, Rahu is going to take all the energy from them. That is why if there is Mangal and Rahu Angarak Yoga, your Mangal is in trouble, not the Rahu. Rahu is not in trouble with Mangal sitting with the Rahu. Jupiter and Rahu, Guru Chandal Yoga, Rahu is not in trouble. No. It is the Jupiter which is in trouble. Please try and understand the depth of a concept that I'm telling you. Saturn alone is not bad for the 7th house. Saturn alone is not bad for the 12th house. First house is the MKS. That's a different story. We're talking of the marriage. But when it is conjunct with Rahu, Rahu destroys Saturn. Rahu destroys the longevity of your marriage. These are the horoscopes where, especially if you have the Saturn Rahu combination, this one, these are like two cheap energies together, very cheap. Rahu is deceptive and Shani is the laborer. The energy of Shani is laborer. And it brings a lot of, until and unless there is a drishti of Jupiter or a benefic, that's a different thing. Okay, then you don't apply this. But if you have Saturn and Rahu, it's a vulgar energy. It's a bad mindset. It's an absolutely bad mindset. You are going to marry someone who is going to behave like a deceptive and an uneducated, sexually driven labor person. He may be a scientist. He may be a doctor. He may be an engineer by his or her profession. But things inside their mind
when it comes to marriage, life partner is not going to be very good, especially if it happens in the seventh house. I must tell you, seventh house, if it is there, think twice. I mean, 12th house I'll take, first house also I'll take, and a person may be cheap for himself. But when it comes in the seventh house, the person's mindset is cheap for the spouse. In the next lecture, I'm going to teach you Upapada Lagna and how Upapada Lagna helps you to understand your spouse. It's a very important concept. But on the same time, if this yoga you see, Saturn, Rahu, Saturn, Ketu, Shrapit yogas, this is a curse. They are known as Shrapit yogas. It's a Shrap. 100% you have done something wrong with that person in the past life, and that person could not do anything to you. He was helpless or she was helpless, and she cursed you in the mind. He cursed you. And then you get that Shrapit yoga in your Kundli. You are born with the curse. And you are going to have a cheap mindset. And because of that cheap mindset, you and that partner is going to suffer. आपको क्या लगता है कि जब कोई ऋषि या महाऋषि किसी को श्राप दे देते हैं, तो क्या वो श्राप सिर्फ एक तरफा होता है? नो। जब आप किसी को थप्पड़ मारते हो या आप किसी को पंच करते हो, तो चोट आपके हाथ को भी लगती है. याद रखिएगा ये बात. Same principle is the principle of curses. When you curse someone, that is why you should never curse anyone. When you curse someone, there is some energy that comes back to you as well. Because आपने एक पर्सन को श्राप दे दिया और उस पर्सन की सफरिंग को देखने के लिए और अपना प्रारब्ध कंप्लीट करने के लिए आपको भी जन्म लेना पड़ेगा. यू अंडरस्टैंड? एंड यू हैव टू स्पेंड 2, 3, 4 बैड इयर्स विद दैट पर्सन एंड गो. इसीलिए मैं बार बार सबको कहता हूं, क्षमा, दया, क्षमा कर दो, दया कर दो. ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है. आपकी कुंडली में तो सफरिंग है ही है, लेकिन जिसके साथ आपकी शादी हो रही है उसके साथ भी सफरिंग है. वो भी सफर कर रहा है. You understand? This is where the problem starts coming. Maximum divorces and suffering I have seen until and unless you become extremely spiritual. I repeat it again. Until and unless you become extremely spiritual is the combination of Saturn and Jupiter in a kundli. If you find this Saturn Jupiter in the 7th house, in the 4th house, in the 3rd house, in the 11th house, or in the 12th house, especially,
7th house of marriage, 4th house of Sukhsthana, 3rd house of the Kama Trikona starting, 11th house of hopes, wishes, and desire, 12th house of your sexual life and pleasures. Be it Navamsha, be it D1 chart, anywhere. I repeat, Saturn, Jupiter in the D1 or in the D9, wherever. This person is going to take marriage as a very spiritual event in life, and this person is going to be very dedicated towards marriage. The moment this person doesn't get the affection, in 50% of the horoscopes that I have seen, the moment I see Saturn, Jupiter together, especially in the 7th house, 4th house, 12th house, and if the kundlis doesn't match, divorce पक्का है, श्योर है कि उनकी सेपरेशन होगी ही होगी. There is no doubt about it. It's a very, very dangerous combination for a marriage. Anyone who has seen this or has it and suffered in the marriage, you can always write in the chat box. Always. Beat D9, beat D1. Because you see, Jupiter is the graha which is going to give you children. Jiva Karaka. And Shani is sorrow. Shani is sorrow. And whenever this combination is there in the 7th house, it is only the willpower that can save the marriage. There is nothing in the marriage actually. There's nothing in the marriage. दया अगर मन में हुई तो विवाह बचता है, नहीं तो नहीं बचता है. See, people are saying, I've seen it, 7th house, Jupiter, Saturn. The moment you look at Jupiter and Saturn together in a chart in the houses where the energy is all about marriage, 7th house, 4th house, 3rd house, 11th house, 12th house, you should be conscious. You should be very conscious. Even in the Navamsha, extremely conscious. शादी टूट जाएगी. Absolutely. Shashankji. Saturn, Jupiter, 11th house, upside down. Life becomes upside down. एक भी और योग हुआ कुंडली में डिवोर्स का, शादी गई. एक भी और डिवोर्स का योग बना. लोग लिख रहे हैं, the personal life will go for a toss. धर्म कर्म अधिपति राज योगा. Don't give me this.
छठे भाव में, अष्टम भाव में अलग बात है, वो शादी के साथ नहीं जुड़े हैं। अष्टम भाव में होगा तो आपके ससुराल पक्ष के साथ जीरो रिलेशनशिप होगा आपका, जीरो। दे विल बी द रीजन ऑफ योर सेपरेशन एंड डिवोर्स। फिफ्थ हाउस में द चाइल्ड विल बिकम द रीजन ऑफ सेपरेशन और डिवोर्स। नो चाइल्ड, अगर प्रोजनी के योग खराब हुए। फोर्थ हाउस में हुआ तो आपका मन ही नहीं करेगा उस पर्सन के साथ रहने को। सेवंथ हाउस में हुआ तो आपकी दया खत्म हो जाएगी एक दूसरे के लिए, इतनी नफरत हो जाएगी कि आप किसी को माफ ही नहीं कर पाएंगे फॉर नो रीजन। एकादश भाव में हुआ तो होप्स, विशेस, डिजायर सारी स्पिरिचुअल होंगी। That person will tell you, no, no, no. She says, okay, let's have a glass of wine together. And the person will say, oh, ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा. You understand? Because he's taking marriage in a very spiritual way. And it can be vice versa also. That you will get a partner who will be so much into drinks and other habits, and you are suffering because of that person. You are taking marriage, वो जो कहानी फिल्मों में दिखाई जाती है कि हम प्यार भी एक ही बार करते हैं और शादी भी एक ही बार करते हैं, शादी एक ही बार होती है सेनोरिटा, उसमें कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। किसी को एक बार प्यार नहीं होता, प्यार बहुत बार होता है। प्यार बहुत बार होता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सी आपके लोगों की, बहुत सी जिंदगी में बहुत से वन साइडेड प्यार रह गए होंगे, बताया ही नहीं कभी। वो इसलिए नहीं बताए क्योंकि वो सही नहीं था, इट वॉजंट करेक्ट, एथिकली गलत था वो। तो ये सब फिल्मी कहानियां हैं कि शादी एक बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है। इट डजंट वर्क लाइक दैट, नो। मेरे पास एक केस आया, लड़के की कुंडली में शनि राहु सेवंथ हाउस में था। अब शनि राहु सेवंथ हाउस में है तो ऑब्वियसली केतु फर्स्ट हाउस में होगा। और मंगल 12वें में था। 12वां जो मंगल होता है ना, उसको शादी चाहिए होती है सिर्फ बच्चे के लिए। शादी मतलब बच्चे करो। मंगल इज सेक्स, ट्वेल्थ हाउस इज बेड। उस इंसान को बच्चा चाहिए विद शादी, विदाउट शादी। विदाउट शादी अगर कंसीव हो जाए तो अबॉर्ट करवाने के लिए भागते हैं। विद शादी अचीव हो जाए तो मिशन अकम्प्लिश्ड। अब सैटर्न राहु सप्तम भाव में है, 12वें में मंगल है, लगन में केतु है। फर्स्ट नाइट को अपनी वाइफ के साथ बैठा है, उसकी वाइफ ने मुझे ये सारी स्टोरी बताई। बोल रहा है यार, मेरी तो गर्लफ्रेंड थी, मेरा पास था, मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स के ऊपर मैं डिपेंडेंट, मतलब वो डिपेंडेंट हूँ क्योंकि हमारा बिजनेस है पापा के साथ, बड़े भाई के साथ, और हमारा ट्रेडिशनल लकड़ी का बहुत तगड़ा काम है। वो मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स की इंग्लैंड के अंदर टर्नओवर है, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या है। मैं छोड़ नहीं सकता था, तो मेरी वो लड़की पसंद नहीं थी मेरे माँ बाप को, तो मैं शादी कर नहीं सका, तुम्हारे साथ मेरी अरेंज मैरिज हो गई। लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं सकता, आई कांट लीव माई गर्लफ्रेंड।
वो मेरे साथ दोस्त रहेगी, कभी कभार मिलेगी भी। अगर कभी कभार उसका फोन आता है तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। इफ यू आर फाइन with this, then I accept you as my wife. Then I will touch you. Otherwise, I can sleep. I can take the pillow. I can go and sleep on the sofa. Whenever you are ready with this acceptance that she was my past and she will still remain my friend, and you accept it, we can have babies. You will be my wife and everything. If it is not like that, then I'm sorry, I'm not going to touch you. I think this is the cheapest mindset of a man. If you're supposed to ruin somebody's life like that, if you're going to become a shrapit person for someone like that, you better not marry, no? And that girl suffered for 10 years with that person. Just because of the family pressure, she said, okay, I'll accept it. And then 2 children were born within the span of 7 years. In the 10th year of her life, she couldn't take it anymore and got separated, divorced. क्योंकि उसका प्रारब्ध खत्म हो गया था उसके साथ. आप 2 मिनट के लिए इस सिचुएशन को एम्पथाइज करो अपने ऊपर. सोचो कि आपका पति या आपकी पत्नी ये बोले, आपकी शादी हो चुकी हो, 1500 लोग उस शादी में आ चुके हैं, उसने एंगेजमेंट भी की, कोर्टशिप पीरियड भी था, 2 दिन बाद आपकी एक बहुत शानदार जगह पे हनीमून की टिकट्स बुक्ड है, आपको पैकिंग करनी है, आपको जाना है. And in the first night, this guy or this girl is telling you all this. Isn't it a curse? श्राप लग गया ना उसी दिन. And this Saturn Ketu Yuti, she will come to you in the morning, you are still sleeping, she's taken a bath, she's given a Surya Jala, Surya ko jal de diya, and now she's come to wake you up. उठ जाओ, ऑफिस जाना है. You try to hold her hand, she will take away the hand from you. And she will tell you that I have taken the bath, please don't come near me. You first take bath and then. Because she's taking married life in a very spiritual way, and it is only 5 days that you've gotten married. You've taken bath, you've done the puja. Ideally, it is right. But what happens in Kali Yuga, no? And if you are trying to force yourself with her, she will go back and take bath again. And do all the puja, all the ritual again. One person is spiritual, the other is not. One person is ethical, the other is not. Not Saturn Ketu, obsessively spiritual, and those untouchable people who think that okay, this thing is only for this particular time at this part of the day. And then you realize that, does he really love me, or is he uncomfortable with me, or what is wrong and what is not wrong? Because you are the one who at times doesn't take a shower whole day and brushes at 5:30 in the morning, 5:30 in the evening. Disaster. Saturn, Jupiter, you are so dedicated. You're so dedicated towards your life partner.
दैट लाइफ पार्टनर आपके सिर पे चढ़ के नाचने लग जाता है, आप उसकी हर बात मानने लग जाते हो और इतना आगे निकल जाते हो कि वहां से वापस आना ही मुश्किल हो जाता है। उसको लगता है कि ये इंसान मेरे लिए बहुत अच्छा क्यों है, इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए। बिकॉज सैटर्न जुपिटर विल मेक यू सो आइडियलिस्टिक टुवर्ड्स योर स्पाउस, सो गुड। और सामने वाले को शक हो जाता है कि इतना एक इंसान इतना अच्छा क्यों हो रहा है। एंड उस लाइफ पार्टनर को लगता है कि ये सब कुछ आपसे एक दिन छीन रहा है, पागल बना रहा है। एंड देन द सर्कमस्टांसेस जस्ट टर्न अराउंड। दिस इज नॉट डन। Whenever you see such yogas, please be careful. And especially on top of it, if you have 6-8 lagnas. What are 6-8 lagnas? Aries and Scorpio. It's a 6-8 lagna, right? Two and 9 is a 6-8 lagna, is it? 3 and 10 is a 6-8 lagna. शटाष्टक लगन है, शटाष्टक लग्नेश है, शनि राहु की युतियां हैं, शनि बृहस्पति है। एंड स्पेशली if you have a द्विद्वादश लग्न, द्विद्वादश लग्न के लिए सबसे डेंजरस युति पता है कौन सी है? याद रखना, पॉइंट नंबर 18। द्विद्वादश लग्न, द मोस्ट डेंजरस युति इज सैटर्न वीनस टुगेदर। शनि शुक्र, इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर देनी है शादी के 3 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, डिवोर्स एंड सेपरेशन। लगन द्विद्वादश है, यानी कि मेष लगन की अगर वृश्चिक लगन के साथ शादी हो रही है, सॉरी वृषभ लगन के साथ, नॉट वृश्चिक, चंद्रेश, Saturn, Venus and Ketu becomes more bad. Now Venus was afflicted by Saturn, now Venus is afflicted by Ketu. Venus तो फंस गया। Saturn Venus की युति विवाह में सेपरेशन करवा देती है। Especially in which house? Especially in the 12th house. Especially in the 7th house. Both in the D1 and the D9. You know, people have Dvidvadash Lagna from each other. People have 6-8 Lagna from each other. And people have Nau Pancham Lagna from each other. मैंने मना किया शादी करने के लिए इसमें। किसी का रिलेशनशिप हो 8 साल का, प्यार करते हो एक से किसी से बहुत ज्यादा,
Saturn, Venus in the ninth house also, Venus not good. Because it is aspecting the third house of new beginnings. शुरुआत ही नहीं अच्छी हो पाती. षडाष्टक द्विद्वादश नौ पंचम लग्न है, 10 साल से रिलेशनशिप में है. गुरुजी हम रह नहीं सकते एक दूसरे के बिना. बड़े रिलेशन ऐसे होते हैं जिसमें एक दूसरे के बिना नहीं रहा जाता. नहीं रहा जाता. श्योर है. क्या करें? आज उपाय बताता हूं इसका. शटाष्टक अगर लगन है, पत्नी है आपकी शटाष्टक लगन की, लग्नेश की, चंद्र की, चंद्र में अगर ये योग आएंगे तो भकुट दोष कहलाएगा. क्या कहलाएगा? भकुट दोष. अगर चंद्रमा शटाष्टक हो, द्विद्वादश हो, नव पंचम हो तो भकुट दोष. लगन हो तो लग्न दोष. लग्नेश इस प्रकार बैठे हो तो लग्नेश दोष. शटाष्टक लगन है, शाम के समय आफ्टर सनसेट एक दिया अपने गुरुओं के सामने जला दो, और अगर गुरु नहीं है तो शिव जी के सामने जला दो. ओनली आफ्टर सनसेट इन द इवनिंग. शटाष्टक को ठीक सिर्फ शिव जी के सामने दिया कर सकता है. पति पत्नी दोनों मिलके कर दें, दोनों में से एक जना कर दे, शटाष्टक लग्न की रेमेडी हो गई. डन. इफ इट इज द्विद्वादश, lit a lamp of desi ghee in front of Ma Durga after sunset. And if it is Nau Pancham, lit a diya in front of Vishnu ji or Krishna. अब मेरे पास एक भाई साहब आए. भाई साहब क्या कपल आया, 28 साल के, भकुट दोष नौ पंचम. सुन लो ध्यान से. भकुट दोष नौ पंचम, चंद्रमा 9:5, लग्न दोष 6:8, और लग्नेश दोष जो दोष था वो 2:12. और बोल रहे हमें तो शादी करनी है, हम 10th क्लास से एक साथ हैं, 29 साल के हो गए हैं और हमें तो शादी करनी है. माँ बाप को सबने बोल दिया शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी. सारे पंडित अगेंस्ट हैं. तो बोला, मैंने कहा गुरुजी क्या करूं? तो मैंने उसको बोला बी अ मैन, शादी कर यार. किसी लड़की के 12 साल तूने वेस्ट कर दिए हैं. या तो जब तू 10th में था उस समय कुंडली दिखा के दोस्ती करता उसके साथ. 12 साल से तुम्हारी दोस्ती है, हर जगह तुम घूम आए, हर अच्छे बुरे वक्त में वो तेरे साथ खड़ी हुई और तू उसके साथ खड़ा हुआ. इतने बर्थडे मनाए, इतनी दिवालियां इकट्ठी मनाई, इतने वैलेंटाइंस मनाए, एक दूसरे को टेडी बियर और एक 20 रुपए का पेन देने से शुरू हुए थे. लास्ट ईयर आपने एक दूसरे को रोलेक्स दी. इस लेवल तक पहुंच गए आप लोग. अब तू बोल रहा है यार ये सारे दोष हैं, उपाय बता दो. उसका केवल एक ही उपाय है, और वो है, अगर ये तीनों या दो या एक से ज्यादा दोष हो तो कुछ नहीं करना. रोज शाम को उस फीमेल को तुलसी के नीचे जोत जलानी है. बस तुलसी मैया के नीचे. आपको पता है आपकी मम्मी बाय डिफॉल्ट तुलसी के नीचे जोत जलाती थी, उनके डिवोर्स नहीं होते थे. क्योंकि तुलसी के नीचे जब आप दिया जलाते हो
आप बोलते हो शिव जी है आपके लिए, तो वो शिव जी को जाता है। तुलसी के नीचे जब आप दिया जलाते हो, कहते हो कि ये माँ दुर्गा के लिए, तो माँ दुर्गा को जाता है। और जब आप विष्णु जी के लिए जलाते हो तो विष्णु जी के लिए जाता है। तुलसी पे के नीचे शाम के समय दिया जलाया हुआ आपके विवाहिक जीवन को संपूर्ण कर देता है, चाहे जितने भी दोष लगे। केवल इतवार को तुलसी मैया की पूजा नहीं होती है, नॉट ऑन संडे, एक्सेप्ट संडे, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे you should do it if you want to have a good married life. कितने लोग जलाते हैं आप में से तुलसी के नीचे दिया? जो वैष्णव है वो तो जलाते हैं। जो वैष्णव है सुबह 4:10 पे जब मंगला आरती होती है तो तुलसी मैया की पूजा साथ में होती है। शशांक जी, आपकी माँ और आपकी मदर इन लॉ की वजह से आपका विवाह बचा है, क्योंकि वो दोनों जनी आपको प्यार करती होंगी बहुत ज्यादा। There is a long story behind a Sunday. There is a curse because Surya belongs to Shiva. So we'll teach this story. It's a homework, Raju ji. Why not on a Sunday? You'll easily find the answer, but then find it and tell it to everyone. I will try. Okay. There's a conflict between Ma Tulsi and Shiva. Go find out. You should never put Tulsi on Shiva. If you put Tulsi on Shiva, widowhood is guaranteed. These are mythologies. Find out. There are stories behind it. Tulsi Diya will save your marriage. It is so simple. And Tulsi is one thing that you will find in the America and Canada also. So you people don't have an excuse. You can take a Tulsi plant. Tulsi plants have already reached western part of the world. You can get them. So you don't have that excuse. हमने केवल अस्त्र दिया है, अभी ब्रह्मास्त्र देना बाकी है। यानी गुरुजी आपने ब्रह्मास्त्र दे दिया, अभी ब्रह्मास्त्र तो बहुत है हमारे पास। गुरुजी इतना ही काफी है, ये भी बहुत जरूरी है देना जी। थैंक यू सो मच। आशीर्वाद। Even seeds, Raman. No seeds, my friend. बोले तुलसी के सीड्स के नीचे दिया जला दे। अरे नहीं यार। गुरुजी मेरा कहने का मतलब कि सीड्स भी लेके हम जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब तो लेके जा सकते हैं क्योंकि तुलसी इज एवरीवेयर। इट्स देयर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जी गुरु। बट यू नो व्हाट, मेरी एक और ऑब्जर्वेशन है। कुछ शटाष्टक लगन ऐसे हैं जिनसे दोनों में से एक पार्टनर को बहुत फायदा हो जाता है। अब देखो, क्या 7 और 12 लगन के लोगों की शादी अगर होती है तो क्या ये शटाष्टक है? बोलो, क्या ये शटाष्टक लगन है? जी गुरुजी। बिल्कुल है। बॉय इज तुला लग्ना, गर्ल इज स्पाइसिस लग्ना। आर दे 6 to 8 फ्रॉम ईच अदर? यस। इसमें पता है आपको, द बॉय
will really enjoy this marriage and the girl will not. You know why? Because the Lord of this Lagna is exalted here. The Lord of the Tula is exalted in the Pisces. The boy will benefit. It will be like a lottery. The girl will suffer. And then this boy comes to you and tell you, Guruji, my wife is very bad. She's doing this, she's doing that. She's like very bad lady. You know who is bad out of them. Because the boy is benefiting and the girl is suffering. Because जब भी आपके पास कोई कुंडली दिखाने आएगा ना, वो अपनी स्टोरी बताएगा, वो अपनी चीजें बताएगा, वो दूसरे की नहीं बताएगा, वो आपको कुंडली देखकर पता लगेगा. So do not get carried away while listening to someone. आज दोपहर को मैंने एक कंसल्टेशन दिया, उस इंसान को मैंने बहुत अच्छे से डांट के समझाया. And he agreed. He was telling me that he is in a do or die situation, this happening, that. I said, shut up. You're wrong. Don't tell me, don't give me this crap, okay? He said, you're right, Guruji. I'm having fights with my family. And they are saying exactly what you are saying. I said, yes. Because you are wrong. If you tell me that you are right, I can see it from your horoscope that you are wrong. आप गलत हो. आप ठीक नहीं हो. अगर 4 boy है और 9 girl है, who is going to benefit? 4 नंबर लगन, कर्क लगन का लड़का और धनु लगन की लड़की. Who is gonna suffer and who is gonna benefit? Because the girl is exalted. Jupiter is exalted in the Karka. So it is a great marriage for the girl. But it is a pathetic wife for the boy. He's going to suffer. She's going to dominate. She's going to become fully aware after the marriage. Exaltation means aware, commanding. She will be fully aware of the SOP of the marriage. Just after marriage, she will become goddamn intelligent. The worst combination, अगर मैंने अपने जीवन में देखा है, जिनकी शादी हुई है, that is 1 and 6. मेष लगन की कन्या लगन के साथ. मेष कन्या, either sides. Mars and Mercury. ये बहुत बड़ा कलेश है. They may like each other so much before marriage. They'll be so intimate. They'll be so lovable. But Mars and Mercury, although 3 and 8 is not very dangerous, because 8 is half Ketu. 8 is also the house of Ketu. And somehow 3 is also somewhere associated with Rahu. So 3 and 8 is not that difficult as compared to pure Mars and Mercury, which is 1 and 6. And 6 is also Mula Trikona of Rahu. Exactly. It is like, from morning to evening, you are telling each other कि तू यहाँ पे गलत है, तू यहाँ पे गलत है, तूने ये गलत किया, तूने ये गलत किया.
You are just finding the mistakes of each other. And the divorce and separation will come very quickly. Within 3 months of marriage. And if it is delayed, it can delay because there are certain yogas जो delay कर देंगे divorce को. केतु, ये वो, शनि, सब divorce को delay करने वाले हैं. आपको पता है केतु कैसे divorce को delay करता है? आपका झगड़ा शुरू हुआ बुध की दशा में. केतु बोलता है मैं divorce दूंगा इसको. वो 17 साल की बुध की दशा पूरी निकाल देता है. केतु की जब दशा आती है तब divorce होता है. आपको लगता है केतु ने आते ही डिवोर्स दे दिया. अरे केतु ने आपके डिवोर्स को प्रोलॉन्ग किया क्योंकि वो देना चाहता था. केतु का अंतर आते, केतु की प्रत्यंतर आते, केतु की महादशा आते डिवोर्स हो जाता है लोगों का. अच्छा एक बात बताओ, अगर 2:7 लगन हो तो ये भी षटाष्टक है ना? इन दोनों का लगन लॉर्ड वीनस है. अब both benefited. दोनों की शादी से बेनिफिट होगा. Yes. एक्सेप्शंस है ना, कुछ एक्सेप्शंस बता रहा हूं. टू इज टू सेवन इज फाइन. लग्नेश देख लो एक बार कि दोनों के शुक्र कैसे बैठे हैं. लग्नेश, आर दे सिटिंग 1:8, 1:2, कैसे बैठे हैं? यू नीड टू वॉच दैट. Which sign is the best sign for Venus? कौन बताएगा? चलो. Which sign is the best sign for Venus in Jyotisha? Taurus. Sorry? Taurus. Taurus. Pisces. Pisces. Jupiter, so Venus gets exalted in Pisces. My question is not what you are answering. Did I ask exalted, debilitated, own sign? My question is simple, that which is the best sign for Venus? शुक्र सबसे अच्छा किस राशि में होता है? चलो, शुक्र क्या है? शुक्र क्या है? It is love, romance, luxury, love, kark of marriage, Devotion. devotion. Wedding 7. Sorry, 7th. okay. Why Dipali? Why Cancer? Why Sunanda? Why Cancer? Because of fourth house in Kal Purush Kundli. But why? Why these signs? Because moon is the source and one is the carrier of that. So then why Venus how it and, is good then? uh, Starts from Sampurna Digbala is saying fourth, directional strength fourth. Okay. Sunanda, why Cancer? Because Cancer is a water sign Hmm. and Venus is again a water, so और वहाँ पूरी devotion sir, that's why. Okay. both are emotions, lot of emotions. Before even we go to emotion, I want to ask you which is the purest sign out of all 12 signs? Cancer. Answer. Why? Because mother's love is pure. It's Exactly. total devotion. But I tell you the secret. Cancer
is happy in none of the signs. He need a 13th sign to be happy, okay? Which is not possible. Can somebody tell me why? How much is the life of love, luxury, romance? Tell me the life. How much is the life of a romance? Short-lived. Very short-lived, momentarily, and then short-lived. Eventually short-lived. So Cancer wants long-lasting love, Yeah. purest and long-lasting love. Mother is like a love which is forever, you know. Endless. Mother love is endless. Venus love is like minutes, hours, days, few months, maybe few years. That's it. Mother love is like eternal. Mother's love is like Sanatan. Sanatan का मतलब क्या है? Eternal. Sanatan Dharam means eternal Dharam, which is eternal, absolutely eternal. Of course, out of the all 12 signs, Venus is comfortable in Cancer because Cancer give Venus little bit of devotion. That's it. But Venus doesn't want any of the 12 zodiac signs. I must tell you that today. This is the secret. He wants to sit inside Shiva and just do meditation for 12,000 years. He doesn't want any sign. Jupiter would have done it. He didn't do it. It's the Venus who did it. Venus is forced in your kundli to give you all these things. And when Venus is afflicted, you have certainly done very bad karmas. When it comes to personal life, love, romance, sperms, sexuality, it's bad. But Venus in the 4th house gets Sampurna Digbala and devotion, especially in the Cancer sign. He gets lot of devotion. It is like motherly love. The spouse is like a mother to the family. सबकी टेंशन लेने वाला. Because that person is so devoted. And this is like a suffering. It's like a suffering. Either you become devotee or you suffer. Choice is yours. Today I am going to teach you Panch Mahapurush Yogas. Panch Mahapurush. What are Panch Mahapurush Yoga? There are 5 types of Panch Mahapurush Raj Yogas. Very dangerous for marriage. Very dangerous for marriage. The first one is known as Hamsa Yoga. Hamsa Mahapurush Yoga is made by Jupiter. By Dev Guru Brihaspati बनाते हैं. Bhadra Yoga is made by Mercury. Bhadra by Mercury. Malavya Yoga is made by Venus. Ruchak Yoga is made by Mars.
and Shasha Yoga is made by Shani. Sasa Yoga, Saturn. अगर ये सारे ग्रह केंद्र में हो, आपको बहुत सी डेफिनेशंस मिलेंगी, बहुत से साइंस मिलेंगे. डोंट कंसिडर देम, जस्ट कंसिडर व्हाट आई एम सेइंग. अगर ये ग्रह केंद्र में हो in their own sign or exalted sign, लोग त्रिकोण भी डाल रहे हैं, कैप्रिकॉन, ये वो साइन भी डाल रहे हैं. नो, own sign and exalted sign in the kendra makes a पंच महापुरुष याद योगा. That's it. Okay, simple. हमसा योगा में बृहस्पति किस में होना चाहिए? केंद्र में, 9 नंबर राशि में, 12 नंबर राशि में, या 4 नंबर में. 9 और 12 उसके अपने साइन है, 4 नंबर एग्जॉल्टेड है. केंद्र में बुध 6, 3, मीनस 2, 7, 12 ये राशियां हैं. मंगल 1, 8, 10, सैटर्न 10, 11, 7. अगर ये राशियां किसी के भी केंद्र हाउसेस में आती हैं और उसमें शनि है तो शशि योग है केंद्र के अंदर. अगर मंगल है तो रोचक योग है, शुक्र है तो मलव्य योग है, भद्र है तो मौकरी का भद्र योग है, और अगर बृहस्पति है तो हमसा है. फॉर प्रोफेशनल लाइफ, फॉर नेम, फॉर फेम, फॉर एजुकेशन, they may be good yogas, but when it comes to marriage, it is the most pathetic yoga. If you have any of those in the kendra, you are going to suffer in the marriage because of the word Mahapurush. Who will define Mahapurush? Can you define what is a Mahapurush? Mahapurush is a person who is going to compromise, who is going to forgive, who is going to achieve lot of salvation, who is going to be eventually isolated. जिसका मोह खत्म हो जाएगा वही महापुरुष बनेगा. You are going to suffer badly and forgive the opposite partner if you have this yoga in the kundli. माफ कर कर के आप थक जाओगे अपने लाइफ पार्टनर को, उसकी हरकतों को माफ कर के आप परेशान हो जाओगे. कितना माफ करोगे? अब इतना माफ करोगे तो महापुरुष बनोगे ना. What is the condition to become a Mahapurush? The condition to become a Mahapurush is to forgive, 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 forgive. Let go, let go, let go, let go. जब आगे से बकवास कर देनी है तो वो महापुरुष नहीं रह जाता ना इंसान. जब माफ कर देता है तो महापुरुष बनता है. अगर आपकी कुंडली में है तो आप पर्सनल लाइफ के अंदर you are going to suffer because of your forgiving and a very soft nature towards the life partner, or you are going to go away from the life partner forever, and then you will become a Mahapurush. त्याग ही कर दोगे आप अपनी पत्नी का या पति का, त्याग कर दोगे, छोड़ दोगे. कुंडली देखते हैं लोग, कहते हैं अरे वाह, शुक्र उच्च का सप्तम भाव में, मलव्य योग, इस लड़के के साथ शादी कर दो. वो लड़का छोड़ जाएगा उसको या माफ कर करके हार जाएगा उसको, महापुरुष बन जाएगा. और महापुरुषों की पर्सनल लाइफ नहीं होती है. Until I have read the books, 99% of the Mahapurush don't have a personal life. This is like 19th number rule. You should be ready that you are marrying a person who can just leave you for any work or for spirituality or for religion or for politics, whatever.
or he'll be so forgiving, so forgiving, so forgiving that he himself will suffer a lot and eventually become a Mahapurush. Just like I have explained you 20 or 19 or 20 steps, my next target for next 2 to 3 weeks is to explain you the good yogas in marriage so that you can be little happy, so that the marriage can survive. There are certain very good yogas for marriage. And the only yoga to have a good married life is not to have a sensitive nature. If you have sensitive nature, you are going to suffer. खाया पिया मोटा दिमाग बढ़िया, बन ठन के निकले, चाहे जचता है चाहे नहीं जचता है, चाहे ढोलकी लगो चाहे ढोलक, रोज शाम को तैयार होना है. No problem. Those people will survive. Those people are conscious about themselves, who love themselves, who exercise, who work out, who are spiritually inclined. They are going to suffer in married life. पक्का. क्योंकि भगवान स्पिरिचुअलिटी ज्योतिष इंसान को सेंसिटिविटी दे देता है. इंसान सेंसिटिव हो जाता है और जहां सेंसिटिव हो वहां सफरिंग है. There are certain yogas when you become very thick, selfish. Such people have long-lasting marriages. Who are not only living for husband or wife, who are living for their relative, friends, and other things also. Their marriage is also surviving. मेरी माँ बोलती है कि तालाब में ऊपर ऊपर तैरना चाहिए, ज्यादा डीप तैरोगे तो गंध मिलेगा. किसी की भी जिंदगी में ज्यादा डीप चले जाओगे ना तो आपको कुछ ऐसी वीकनेसेस मिलेंगी जहां पर आपको लगेगा कि ये सब सही नहीं है. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरा आज का लेक्चर था. आप इसको थोड़ा डाइजेस्ट करिए, अपने कुंडलियों पे अप्लाई करिए, क्योंकि अभी तो नेगेटिव योग बोले हैं, फिर अच्छे योग भी मुझे बोलने हैं. आज उपाय भी दिए हैं आपको, रामबाण दिया है, ब्रह्मास्त्र तो अभी नहीं दिया है. तो इनको देखिए, शोध करिए, रिसर्च करिए इन पे. यू विल सी, यू विल फाइंड आउट. हमारे पास बहुत रेमेडीज हैं. विल गिव यू मैनी रेमेडीज. उसमें से एक उत्तम रेमेडी है जो तुलसी के नीचे दिया है, वो मेल और फीमेल दोनों जला सकते हैं. सिर्फ ये फीमेल्स नहीं है, मेल भी जला सकते हैं. माँ है, तुलसी माँ है. माँ की सेवा बेटी भी कर सकती है, बेटा भी कर सकता है. समझ रहे हैं आप मेरी बात? जब आप कुंडली देखेंगे आपको पता लगेगा कि कौन से योग हैं जो बचा सकते हैं. वो आने वाले लेक्चर्स में आपको समझाऊंगा, क्योंकि पहले बीमारी के बारे में बताना जरूरी है. जब बीमारी आइडेंटिफाई हो जाती है उसके बाद दवाई दी जाती है. ऐसे नहीं होता कि पहले दवाई दे दो बाद में बीमारी का पता चले. ऐसे डॉक्टर भी होते हैं. तो वो आपको मेडिसिन देंगे एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर. इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, ये मैनेज हो जाएगा, ये मैनेज नहीं होगा. आपको विवाह की लॉन्जिविटी बताऊंगा कि कितनी लॉन्जिविटी है शादी की. वो विमशोत्री महादशा से पता चलती है, वो बताएंगे आपको. फिर आपको बताएंगे कि शादी होगी कब, टाइमिंग्स ऑफ द मैरिज. क्योंकि टाइमिंग्स ऑफ द मैरिज में सब कुछ शुक्र के आसपास घूमना है. 7th फ्रॉम द शुक्र, 3rd फ्रॉम द शुक्र, 11th फ्रॉम द शुक्र, 12th फ्रॉम द शुक्र. वो बड़े बड़े कॉम्बिनेशन है.
तो वो सारा सिस्टम आपको पता लगेगा। जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए कैसी कैसी रेमेडीज है हमारे पास। जिन्होंने अभी लड्डू खाना है, जिनका बड़ा मन है लड्डू खाने को, जिनको कोई समझ नहीं आ रही लोगों का हाल देख के जो लड्डू खा चुके हैं, उनको कुछ नहीं, उनको खाना है। अब खाओ, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, दोनों पछता रहे। तो इससे बढ़िया खा के पछता लो। बिन खाए काहे पछताना, खाओ और पछताओ, ताकि पितृ दोष तो खत्म हो ना। पितृ दोष तो खत्म तभी होगा जब संतान की प्राप्ति। संतान क्यों आपके पितृ हैं? संतान कोई नहीं होता, आपके पितृ ही होते हैं। दादा, परदादा, पापा, लकड़ दादा, भाई बहन, ये संतान होती है आप। पितृदोष तभी खत्म होगा, नहीं तो नहीं खत्म होगा। जाए जिंदगी लगे रहो, पितृदोष नहीं खत्म होगा। अगर आपने इस जन्म में शादी नहीं की तो आपने ये जन्म पितृदोष के ऋण के लिए व्यर्थ किया। और अगर आप बच्चा अडॉप्ट करते हो, वो भी पितर ही होता है। किसी और के घर जन्म लेके आपके पास अपनी सेवा कराने आता है, वो भी पितर होता है। अडॉप्शन, सरोगेशन, ये सारी पितरी होती है। मान लो किसी तीसरे घर में पितर ने जन्म लिया क्योंकि वो जल्दी आना चाहता था, आपके पास एबिलिटी नहीं थी, आपने उसको अडॉप्ट कर लिया, वो भी आपका पितरी है। याद रखना, वहम में मत पड़ना। ठीक है, आज इतना ही। यस नंता जी। Guruji, even if you don't have Pitu dosh in your kundli and you don't get married, but the fact that simply you have taken a birth is a Pitu dosh, right? Absolutely, it's a pitra dosh, yes. Because that's the only reason, like that is the main reason why you See, take. if you don't have a pitra dosha and you don't marry and you don't have children, that means you don't have backlog of the pitris, okay? You can get rid of getting into a pitra dosha or not making pitra dosha happy, in this life. You can get away. Mm. You can definitely get away from it. But 90% of the horoscopes have pitra dosha in some or the other way, because you are just looking at the D1 chart. I'm looking at D9, D60, D10, somewhere you'll find it, because with that aspect, your Pitri dosha will be pending. Right. And if you don't have a Pitri dosha in all 16 major Shadoshak divisional charts, you are a fantastic soul. Trust me. Thank you. Okay, so